Hey guys, so welcome to one more interesting session on financial literacy. And as promised by me in the previous session, this session is completely dedicated towards credit cards. What is a credit card, right? So, as I told you in the previous session, there is a clear cut demarcation between a debit card and a credit card. So, let's take a basic example. If I want to buy an iPhone, and the price of the iPhone is like 1,30,000 rupees, okay? And if I'm having an amount equivalent to at least 1,30,000 rupees in my bank account, actually मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसा है, I can view it and use it. So I can use my debit card in that case. And if you have your money, use your debit card only. Do not use a credit card in that case. Do not rely on bank credit, because ultimately bank wants to force you and they will call you and say you कि if you even do not have a credit card, opt for a credit card. Your CIBIL score will improve if you have a credit card. Do not believe anyone. The people who do not have a credit card still they have a good CIBIL score. A large number of people, even the banking people or the sales professional who is talking to you on phone or face to face, he will force you to take a credit card and वो बोलेंगे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, अगर आप लोन नहीं ले रहे तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं बनेगा. The CIBIL score can still be good. Even I have taken no loan in my life and still I have a CIBIL score of more than 750. Now what exactly is a CIBIL score? I will just explain you. So CIBIL score is something that ranges from 300 to 900. उसका 300 to 900 की value होती है. And if you have a CIBIL score of at least 750 or above, you can get a loan at a lower rate of interest. Because a person who is having a CIBIL score of at least 750, or in the least case scenario, at least 700, that person can get a loan from anywhere. And why that person can get a loan from anywhere? Because either he has not taken loan and he has a good score, because उसने लोन लिया ही नहीं है तो वो डिफॉल्टर है नहीं. दूसरी बात, if he has taken loan, he has paid all the installments on time. Installments को we call as EMI, the equated monthly installments, and that comprises both your principal and interest payments. The EMI that you pay monthly. Like for example, if you purchase something and you did not have money for that. So going back to the example of 1,50,000, 1,30,000 where I wanted to purchase an iPhone. So only if I have an amount, then purchase iPhone. If you do not have an amount in your bank account, do not use the credit card. Buy it sometime later. Buy a cheaper phone. And the history has shown the people who have used the least amount of credit or taken least amount of loan, those have become billionaires. And maybe मतलब simple बोलूं तो करोड़पति बने, because they have saved money and that money has accumulated. So CIBIL में क्या है? Obviously the person can get a loan if a CIBIL score is at least 700 or 750, because either he has not taken loan previously, or if he has taken, he has paid all the EMI. And EMI means your principal plus interest का component, and that is paid every month. मतलब every month अगर आपने कोई लोन लिया है, अगर लोन पे मैंने ये लिया है, आईफोन लिया है, okay, and every month I will have to pay किश्त or EMI, equated monthly installments every month, and that would be like as per bank, and the bank would decide how much can I pay every month, and on the basis of that the amount would be there, right? So the thing is EMI ke basis pe, and in the earlier times your interest component is more and the principal payment is less. In your earlier times the interest component is more and the principal payment is less. And why the interest component is more? Because in the earlier times they want what? They want a larger amount must go towards interest, just in case you are not able to pay money. Just in case you are not able to pay money in future. Okay. So in that case, what will happen? At least they would be able to recover some amount from you that you might not pay in future. So that is where they charge you interest, and we'll be coming back on interest when we talk about the time value of money and all that in the next session. Okay. So EMI में स्टार्टिंग में इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना. तो अगर 750 से ज्यादा का सिबिल स्कोर यू हैव, यू कैन गेट लोन फ्रॉम एनीवेयर एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज यू आर अ लेस रिस्की पर्सन. बट इफ यू हैव अ सिबिल स्कोर ऑफ 600 500, तो पहली बात तो वो देंगे नहीं लोन. अगर दिया भी, the rate of interest would be very high. Like for example, if a person who has a CIBIL score of 750 and above, that person might get a loan at 8% or 9%. But if he is having a CIBIL score of 600 or 550, तो पहली बात तो लोन मिलेगा नहीं.
And if that person gets a loan, the rate of interest might increase from 9% to 12, 13%. Okay. So credit card, if that person is not having like 1,30,000 rupees, so that person uses a credit card. And he is given at least 45 days to repay the amount. At least 45 days to repay the amount. एक चीज याद रखना है सिबिल स्कोर. Your CIBIL score shows the credit worthiness of the individuals, as the credit rating is for the companies. Your CIBIL score is for the individuals. ठीक है. तो credit card use करेंगे. Like for example, if you purchase this on 1st January by using a credit card, so the bill for it will come on 1st of February, and from 1st of February they will give you 15 to 20 days to pay the credit card bill. अगर आप यहाँ से लेकर मतलब ये हो गए 30 days, एंड 1st Feb से लेकर 15 Feb तक you have additional 15 days. So total 45 days you have, and that is interest free. Interest pay नहीं करना पड़ेगा. Okay, because obviously the bill for the credit card comes after 1 month and they give you a buffer period for 15 days. So now you have 45 days to pay the bill. तो कुछ करो, लोन मत लो उसके लिए, और try to earn more money or try to save more money in your debit, like in your saving account, and pay the loan within this 45 days. But if you are not paying in these 15 or 20 days, like some companies say it as 15th of Feb, like some says at 20th of Feb. मतलब कुछ कंपनीज देती मान लो कि 15 दिन का टाइम, एंड कुछ बोलते हैं 20 days. 21 day भी हो गया ना, they'll charge you heavy penalty, and that will keep on increasing. That rate of interest won't be same for the penalty amount. It will keep on increasing and even range to 75% rate of interest. क्रेडिट कार्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम आप 10% ही लगा सकते हो, एज इन केस ऑफ लोन वी हैव. Credit card में interest payments can go up to 75%, and that interest payment is a penalty. It's not an interest payment. नाम interest payment है, but reality में it's a penalty, and penalties are very high. सेम चीज, जब पैसा हमसे लेना होता है they will charge more and लेंगे. जब हमें देना होता है पैसा, वो लेने आ जाएंगे, राइट. बट जब उनको हमें पैसा देना होता है, they will go delays and delays and delays. ठीक है. So like this time can subsequently can reduce, because not everyone would buy on 1st of January. If someone is buying on like 15th of January, then that person would have 30 days. If someone buys on 31st of January, that person might have just 15 days. So that you have to see upon you. And do not use the credit card, but still you have to own a credit card in some cases. Because most of the international payments that you make are in the form of the credit card only. And there they don't accept the debit card. So for all those people who say कि क्रेडिट कार्ड तो रखना है नहीं अपने पास, झूठ बोल रहे हैं. क्रेडिट कार्ड रखना है, बट यूज कम से कम करना. यूज ओनली फॉर दोज इंटरनेशनल पेमेंट्स वेयर द डेबिट कार्ड इज नॉट अलाउड, एंड ट्राई टू पे द पेमेंट विद इन 15 days और like 30 days or 45 days on like whatever day you buy, but do not exceed even for a 1 day. इंटरेस्ट लगा देंगे. 1-2 दिन छोड़ भी सकते हैं अगर आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, जान पहचान है, बट रिस्क मत लो. नहीं है तो 1 दिन बाद वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के वो घर पे भेज देंगे या फिर मेल कर देंगे. सो अवॉइड दिस. ओके. सो एवरीवन ओन्स एटलीस्ट 1 क्रेडिट कार्ड. एक होता है, बट यूज ओनली इन केस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट, बिकॉज वहां पे दे यूज ओनली द क्रेडिट कार्ड, और फॉर अटर इमरजेंसी, बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई, कोई सोर्स नहीं है, देन यूज द क्रेडिट कार्ड. इट शुड बी अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एज वी कॉल द RBI. लेंडर ऑफ लास्ट. कुछ नहीं है तो यूज करो तुम क्रेडिट कार्ड, बहुत इमरजेंसी हो गई. एंड कुछ नहीं है का मतलब ये नहीं है कि मतलब आईफोन के लिए पैसे नहीं है तो लाइक वी आर यूजिंग द क्रेडिट. नो, आईफोन इज अ लग्जरी, नो नीड टू डू इट. ठीक है. सारे पैसे खत्म हो गए, लाइक समवन इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, और समवन लाइक मतलब कि रिलेटेड टू मेडिकल क्लेम्स एंड ऑल दैट, सब कुछ खत्म हो गया, देन अप्लाई दिस, बट यूज इट इन द लीस्ट पॉसिबल सिनेरियो. But do you people know you can even earn money from the credit cards? Even earn money from the credit cards. How? Let's take a simple example. You bought an iPhone on 1st of January by using the credit card for 1,30,000, right? In your bank account, you had like 2 lakh rupees. 2 lakh rupees में से like 1,30,000 you used to buy the iPhone, and 70,000 rupees are left. That 70,000 rupees you can transfer to your FD account or a fixed deposit account by using an auto sweep facility. We call it as an auto sweep facility. So what is it? पहले हम समझते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है.
So when we talk about a fixed deposit is something when you put your money into a fixed deposit or a deposit as suggested by bank and you earn a rate of interest on an annual basis 5.75 से लेकर 6% का। मान लो अगर आज मैंने 1 जनवरी 2022 में 100 रुपीज इन्वेस्ट करे तो अगले साल वो 106 पक्का हो जाएंगे एंड दे गारंटी यू अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो दैट इज वन थिंग। एंड ऑब्वियसली लाइक दीज एफडीज हैव अ लॉक इन पीरियड, 6 मंथ्स का हो सकता है, 1 ईयर का, 5 ईयर का, बट मैक्स टू मैक्स इट गोज फॉर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स ऐसा नहीं है कि पैसा निकालना ही है, यू कैन अगेन लाइक रिन्यू योर एफडीज एंड दे विल गिव यू अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक नो मैटर व्हाट। फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मार्केट बूम पे हो चाहे रिसेशन में हो, फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो वहां पे एक लॉक इन पीरियड आ जाता है। बट व्हाट हैपेंस इन दिस ऑटो स्वीप फैसिलिटी, सी योर सेविंग अकाउंट is earning an interest of like 3 to 4%, right? So in auto sweep facility the remaining balance, that is like this 70,000 rupees जो है बच गया, 2 lakh था and 1 lakh 30 like you have spent, so this 70,000 gets automatically transferred to an auto sweep account। और जब ऑटो स्वीप में जाता है यू गेट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस 70,000 इक्विवेलेंट टू एफडी। 5 to 6% का एफडी के मुकाबले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बट देर इज नो लॉक इन पीरियड इन दी ऑटो स्वीप फैसिलिटी। Just in case you want that 70,000, you need not place a request on the bank. You just need to place a simple request की auto sweep करना, that's it. But if you want that money, there is no procedure. कोई इंस्टॉलमेंट भी कटनी, उसमें से कोई पैसा भी विड्रॉ करना है, नॉर्मली जस्ट ट्रांसफर मनी और यूज अ ATM card to withdraw money. Within milliseconds, the money will get transferred from the FD account. A trigger would be there from that FD account into your saving accounts, and कोई penalty भी charge नहीं होगी. But the only drawback is you lose the interest that मतलब जो तुम्हें earn होगा. Okay, and banks like give you a limit. Some banks says कि 10,000 की लिमिट आपको रखनी है and उससे ज्यादा जो भी पैसा होगा like will be transferring to auto sweep. Some says की 25,000, some says की 75,000. So that depends on the premium card. तो डायमंड कार्ड हुआ, कोई प्रीमियम कार्ड हुआ, तो वहां पे द लिमिट माइट बी 2 लाख रुपीज और लाइक 75,000 रुपीज, बट 10,000 रखते हैं मिनिमम। ओके, सो ऑटो स्वीप इज बेनिफिशियल। अगर लाइक आपने मान लो कि 70,000 रख लिए तो उस पर कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ, बट वो होगा कि पॉइंट्स में मिलेगा, ज्यादा खास नहीं मिलने वाला, बिकॉज 5 से 6% आपको साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप 6 को भी अगर आप बाय 12 कर रहे हो तो 0.5 ही आएगा एक महीने का एटलीस्ट, तो 0.5% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है। एंड पीपल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ऑटो स्वीप फैसिलिटी इज अ ग्रेट वन। इट इज ग्रेट इफ यू आर कीपिंग मनी एटलीस्ट फॉर 1 ईयर एंड आप इतना कमाते हो कि आपके सेविंग अकाउंट में इतना पैसा रह जाता है, दैट गेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू दी ऑटो स्वीप फैसिलिटी। बट अगर नहीं है देन दिस फैसिलिटी इज यूजफुल, बिकॉज 0.5 का इंटरेस्ट कमा के कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं करी, राइट? पीपल से तुम मतलब लाइक यू पीपल कैन अर्न फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड्स एंड लाइक क्रेडिट कार्ड से हम कमाते एग्रीड, तभी कमाते हैं व्हेन दे हैव ह्यूज वेल्थ, because those people who are saying that they make money from the credit card instead of like giving to the credit card companies, because they put their money into FDs by using the auto sweep facility, or maybe they can also put their money into the overnight funds. There are some government securities or short term funds available by the banks, and overnight होता है कि आज पैसा डाला and तुम कल विड्रॉ कर लोगे तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, and that is पॉइंट में, या कुछ मंथली लाइक यू हैव द 30 days bills, like 15 days bills, short bills by government security, जो तुम्हें मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो देते नहीं है, या द थिंग इज you purchase them at 90 rupees at a discount value and they give you just 100 rupees, तो वहां पे भी कुछ फायदा नहीं है। तो बोलेंगे कि you can buy those bills at a discount and redeem at par 100 rupees, buying at discount 90 and 100 is the par value, वहां पे भी कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज एक मंथ में तुम इंटरेस्ट नहीं कमा सकते। बिकॉज जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब लाइक वी अर्न फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड्स, दोज पीपल हैव ह्यूज वेल्थ इन मिलियंस एंड करोड़ जो उनके बैंक अकाउंट में रहती है, तो पैसा उनके बैंक अकाउंट में रह जाता है एंड दैट्स गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू ऑटो स्वीप बाय यूजिंग एफडी वाला फंडा। सालों साल रहता है, 7% उनको मिलता ही रहता है, 5% 6%। बट अ नॉर्मल इंडिविजुअल जिसके पास इतना पैसा ही नहीं है, जिसकी कम सैलरी है, हु कैन नॉट कीप इन सेविंग बैंक अकाउंट बहुत सारा पैसा, हाउ कैन यू ट्रांसफर टू, और अगर ट्रांसफर भी करेगा 45 डेज से पहले निकाल लेगा, बिकॉज ही हैज टू पे लाइक सम अमाउंट टू द क्रेडिट कार्ड, राइट? तो उसके लिए फायदा नहीं है। अब उस पर्सन के लिए भी थोड़ा सा फायदा
द पर्सन लाइक हु डज नॉट हैव मनी, बिकॉज अगर ये 2 लाख रुपीज उसके पास है, ठीक है, अगले मंथ उसकी सैलरी आ गई लाइक 1 लाख रुपीज, तो नाउ ही हैज लाइक 3 लाख रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट, राइट? इसमें से लाइक ही हैज टू पे लाइक 1,30,000, ये 1,30,000 पे कर दिया, बट वो 70,000 जो गए हैं, इसकी बात कर रहा हूँ, इफ ही कैन मेंटेन दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, साल तक, देन ही कैन गेट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन उसको मिल सकता है। बट आइडियली अगर सैलरी कम है तो ही कैन नॉट इवन लाइक कीप दैट, उसको वो निकालना ही पड़ेगा। अगर निकाल भी लिया, 5,000 भी उसके मान लो कि ऑटो स्वीप में रह गए, अगर 70,000 में से भी उसने लाइक 60 निकाल ली फॉर सम पर्पसेस एंड 10,000 भी रह गए, स्टिल उस 10,000 पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकता है, 7% का, 8% का। तो for that small amount, small to small amount, if he can save and keep it at least for 1 year, then he can earn. To be very frank, FDs में अगर तुम 1,000 भी रख रहे हो एंड 7% कमा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पर वहां पे उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट मतलब कि कमा सकता है, ठीक है। But do not look the credit cards for the purpose of earning interest or making money. Keep it as a liability. I'm being more practical. People who have millions and crores of their wealth, they keep this auto sweep facility because they're able to maintain that account balance. सालों साल रहता रहेगा, 10 साल 20 साल, और मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बट एक नॉर्मल पर्सन इतना मेंटेन नहीं कर सकता, वो कुछ ना कुछ निकालता ही रहेगा फॉर इमरजेंसी का पर्पस में, तो उसे बहुत इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। सो बी प्रैक्टिकल, keep the credit cards as separate, right? That was all for today. I'll see you in the next session. Thank you so much.